Standard 9th, Chapter 3 Triangles, Geometry. Practice set 3.1. So, before we start this sum, let's understand something. Now see, this is a triangle. Okay. So, we all know that all the three angles, measure of all the three angles is equals to 180 degree. Okay, ये तीनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. सी शेप से ही पता चल रहा है. और ये 180 तीनों को जब हम ऐड करते हैं मेजर तो 180 डिग्री होता है. सो नाउ रिमोट इंटीरियर एंगल. रिमोट इंटीरियर मीन्स दिस, ये जो एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, ये जो है दिस इज़ इक्वल टू, इसका जो मेजर होगा वो इक्वल टू इसका जो नेबर है, ये जो उसका पड़ोसी है उसका, इसको छोड़ के इन दोनों के एडिशन से. दैट मीन्स समझो इसको d दे देते, तो d इज़ इक्वल्स टू, ये c को छोड़ देंगे हम लोग, a प्लस b. मीन्स a प्लस b अगर 120 है, सो दिस इज़ ऑल्सो 120 डिग्री. So this is said to be remote interior angle theorem. Okay. Also, now see, C plus G is equals to 180 degree because they are forming linear pair angles. This and this, they are forming linear pair angles. Now, see, one more is what? We all know now this triangle, all the measure will be, समझो for example this is 60 degree, this is 50 and this is 70. So if I draw a exterior angle outside, so this will be equal to this is 110. तो जब हम ये 110 को बाकी से कंपेयर करेंगे, it will be always greater. So this is said to be exterior angle property, कि ये जो exterior angle है वो angle is always greater than other three angle. बाकी के तीनों angle से वो greater रहेगा. ओके, अगर उसको सिंगल में कंपेयर करेंगे तो यार इन शॉर्ट एक रिमोट इंटीरियर देखे हमने कि आउटसाइड एंगल इज इक्वल टू इनसाइड ऑपोजिट टू एंगल. नाउ see the first sums. In the following figure, ACD is an exterior angle of triangle ABC. Angle B is 40 degree and angle A is 70 degree. Find the measure of angle ACD. Okay, so we will write ACD is exterior angle given. Therefore, ACD is equals to angle A plus angle B by help of remote interior angles. Therefore, we know that ACD is equals to 70 plus 40, that is equals to 110. So therefore, measure angle ACD is equals to 110 degree. Okay. Now next sums. Okay, second sums. In triangle PQR, P is 70 degree, Q is 65. Then find R. So now see, we know all the measures, all the sum of measures of angle of a triangle is 180 degrees. So in PQR, according to formula, if we write measure angle P plus Q plus R is equals to 180 degree by sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. So therefore
angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree. First we will write, that is 70 degree plus 65 degree plus R equals to 180 degree. So R equals to 180 degree. Now see, addition of these two is equals to 135. ये बन गया 135. तो that we will bring here. 135 यहाँ आ जाएगा. तो therefore measure angle R equals to 180 minus 35 is equals to 45 degree. The measure of angles of a triangle are this x degree, x minus 20 the whole degree, x minus 40 the whole. Find the measure of each angle. So एक triangle के 3 एंगल दिए, तो ये फर्स्ट वाला एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, and this one is the third angle. So we know that sum of all 3 angles of a triangle is 180 degree. So therefore when we open this bracket, x degree plus, because it is plus there will be no changes while opening the bracket. अगर माइनस होता तो साइन में चेंजेस आते, but since it is plus, so no changes in brackets. Now x plus x plus x, so that is equals to 3x, and minus 20 minus 40, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, so that means minus 60 degree equals to 180 degree. So therefore now see, this minus 60 degree we will bring here, so 3x will be 180 degree, minus will become plus 60 degree. So 180 plus 60 will be equals to 240 degree. So therefore now this is multiplication form, so x is equal to 240 upon 3. So 3 ones are 3 8s are and 0. So therefore x is equals to 80 degree. Okay, x is equals to 80 degree. So now this is the first angle. Second angle is what? X minus 20. So that is 80. ये x का value 80 मिला. So 80 minus 20, that is equals to 60 degree. And the third angle is x minus 40 degree. So that is 80 minus 40. That is equals to 40 degree. So now to check your answer, in rough column you add all this. See, you will get equals to 180 degree. So that is sum of a angle. Fourth question, the measure of one of the angles of a triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of other is thrice the measure of the smallest angle. So now see what they are saying. There is a triangle in which there is the smallest one. So first let's write, let the smallest angle measure be x degree. So according to condition, यहाँ पे क्या दिया है, बाकी दो है ना, एक ट्वाइस है और एक थ्राइस है, एक दुगना है एक तीन गुना है. So therefore other two angles measure be 2x and 3x according to condition. Now as we know that sum of all 3 angles are of a triangle are 180 degree. करेक्ट. यहाँ पे रीज़न देंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल 3 angles of a triangle. So therefore when we add this we get 6x equals to 180 degree, and then x is equal to, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड. So divide.
6 threes are 6 zeros are. So that means 6 thirties are 180 degree. So now as we got first angle x is equal to 30 degree. Second angle is twice, so that is 2 into 30, so 60 degree. And the third angle is thrice, that is 3 into 30, so equals to 90 degree. So therefore the measures of three angles are 30, 60, 90 degree. In the figure, measure of some angles are given. Using the measure, find the value of x, y and z. So now see, अगर z ढूंढना है, so we can do with the help of linear pair. Z plus 140 is 180 degree. So therefore, we can directly say that z plus 140 degree is equals to 180 degree. If you want, you can show first name EMN plus EMR equals to 180 degree. Why? They are linear pair axiom. Okay, so therefore z is equals to 180 minus 140 degree. Okay, so that will be equals to 40 degree. First alphabet. Now second one is y. Same we have to do. Y को दिखाने के लिए NEM plus NET. ओके NET ये एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. सो 180 डिग्री. सो देयरफॉर we will say that y degree plus 100 degree is equals to 180 degree. So y degree equals to 180 minus 100. So y degree equals to 80 degree. Okay, now if you see in a triangle you have two angles, third one is missing, so you can directly show that x degree plus y degree plus z degree is equals to 180 degree. Sum of measures of angles of a triangle is 180 degree. So therefore x degree we do not have, y अभी ढूंढा 80, z भी ढूंढा 40 and 180 degree. So 40 plus 80 120. Okay, and then 1 x degree equals to 180 degree minus 120 degree. So x is equal to 60 degree. I hope you all have understood. In the figure, line AB is parallel to line DE. Okay, find the measure of DRE. That means this one, yellow, and ARE, this outside one. Okay, ये दोनों का measure ढूंढना है. So now see, they have given us information that this line, ये वाली line और ये वाली line parallel है, तो इसको transversal consider करेंगे. तो if it is a transversal, तो ये एक Z shape हो गया, that means alternate angle. So if A is 70 degree, so this G is also 70 degree by alternate angles. तो देखो हमको remote interior angle के हिसाब से 70 और 40 प्लस करके ये मिल जाएगा. So solution, we will write ray AB is parallel to ray DE on transversal AD.
Okay, so therefore we get BAD is congruent to ADE alternate angles. Okay, theorem. So but we know that BAD is equals to 70 degree. So therefore ADE will also be 70 degree. Okay, and ये ADE इज़ नथिंग बट RDE. ए यहाँ से बोलेंगे, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो भी वही एंगल हो जाएगा ना, RDE. सो देयरफॉर वी विल राइट RDE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके, फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2. So now we know that measure angle, ये सिर्फ ये ट्राइंगल में मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल E यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल RDE. तीनों का मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वापस वही रीजन, सम ऑफ angles of a triangle is 180 degree. So therefore R we don't know, but D अभी हमने ढूंढा 70 डिग्री और E already given 40 डिग्री. So R equals to 180 degree minus 70 plus 40 110. So that is equals to 70 degree. So R is equals to 70 degree. Now what left? ये बाहर का ढूंढना है अभी. So therefore ARE ये एक्सटीरियर एंगल हुआ. ओके, एंड प्लस एंगल DRE equals to 180 degree. Okay, so therefore ARE we don't know और DRE अभी हमने ढूंढा 70 डिग्री equals to 180 डिग्री. So therefore ARE equals to 180 minus 70, that is 110 degree. तो ARE equals to 110 degree. Okay, 110 and 70. In a triangle ABC, bisector of angle A and B intersects at point O. If measure angle C equals to 70 degree, then find AOB. Here we need to draw a rough diagram. यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे for our reference. Here A, B and C. What they have said, A and B has bisector. So let's assume this is a bisector. This is a bisector and they intersect in point O. So they have asked us AOB. ये वाला measure ढूंढने बोल रहे AOB. तो ये बाइसेक्टर है तो इन दोनों का मेजर सेम होगा और यहाँ का मेजर सेम होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल टू x एंड CAO equals to OAB equals to y degree. Y ray BO and AO bisects angle A and angle B.
respectively. ओके, सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको x दे दिया ये दोनों को, एंड ये दोनों को y दे दिया. सो उससे क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, देयर इफ वी ऐड ऑल थ्री एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, सो क्यों 180 डिग्री, बिकॉज sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree. So therefore CBO plus OBA plus CAO plus OAB plus ACB equals to 180 degree. Now see what we did, ये जो है ना CBO and OBA, तो here what we did, ये जो एंगल B था, एंगल B, उसको ऐसे दो पार्ट में लिखे, ठीक है, एंड देन ये A वाला एंगल, ये एंगल A को ऐसे दो पार्ट में लिखिए कि एंगल CAO प्लस एंगल OAB, इसको भी दो पार्ट में लिख दिए. हाँ, यानी ये एंगल A हुआ और ये वाला एंगल B हुआ. सो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, यानी यही सम्स को हमने स्प्लिट दो दो नाम से लिख दिया. ओके, सो देयरफॉर नाउ व्हाट हैपन, because they are equal, तो उधर x plus x, they are also equal y plus y, और ACB is given 70 डिग्री, इसका मेजर 70 डिग्री दिया हुआ है. सो यह 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2x plus 2y equals to 180 minus 70, so that is equals to 110. And here 2 common, x plus y. So therefore x plus y equals to 110 upon 2. So therefore x plus y equals to 2 5s are 10, 1 carry, 2 5s are 10, 55 degree. Now x plus y equals to 55 degree, यानी ये नीचे का हो गया x plus y. फिर हमको ये ढूंढना है A O B. So therefore what we will do, A O B, ये वापस सम ऑफ ट्राइंगल हो गया, तो दैट मीन्स 180 माइनस 55 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 125 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 125 डिग्री. व्हाट वी डिड, यहाँ पे ये मिलने के बाद हम शॉर्ट फॉर्म में गए. लॉन्ग फॉर्म में जाते तो हम लिखते हैं ABO प्लस OAB प्लस BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो वही शॉर्ट फॉर्म में गए हम लोग, दैट इन दोनों का एडिशन इतना है. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सम्स. In the adjoining figure, line AB is parallel to line CD. PQ is the transversal. Ray PT, okay, PT and ray QT bisects angle BPQ and angle PQD, means these angles. Just assume this x and x and this y and y. So prove that PTQ, यहाँ पे जो T है, PTQ is equals to 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है. सो लेट एंगल BPT is equals to angle TPQ equals to x degree and PQT and TQD equals to y degree. Okay, y and by
ray ray PT and QT are bisector. So line AB is parallel to line CD given. So therefore BPQ plus PQD equals to 180 डिग्री. ओके, इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गया ना BPQ एंड PQD. तो इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करते तो 180 डिग्री होता है. तो यहाँ रीज़न होगा इंटीरियर एंगल थ्योरम. सो therefore BPT plus TPQ plus PQT plus TQD equals to 180 डिग्री. What we did, ये जो BPQ है उसको दो टुकड़े में लिखा, ये दो, that this plus this. ओके, BPQ ये दोनों को मिला के हुआ और सेम PQD इन दोनों को मिला के हुआ, तो वही हमने लिखा. सो उससे क्या हुआ, x प्लस एक्स देन y प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर नाउ दिस इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो देयरफॉर 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई दोनों में 2 है ना, कॉमन ले लिया, एंड देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ सी, एक ट्रायंगल बन जाता है PTQ. PTQ में x प्लस वाई 90 डिग्री. तो ये जो तीसरा एंगल है वो मिला के 180 होना चाहिए. तो वी विल शो दैट इन ट्रायंगल PTQ, ओके, इन ट्रायंगल PTQ वी विल राइट एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. Reason wise same, sum of measure of angles of a triangle. Therefore as we know this two is x plus y plus PTQ equals to 180 degree. So x plus y we have 90, PTQ we do not have. So PTQ equals to 180 degree minus 90 degree. 90 degree. Okay. I hope you all have understood. Using the given information in the figure, find A, B and C. Now see, A, B and C. So A, B, C. B तो easily बता देंगे, vertically opposite angle. C also ये दोनों को ऐड करके 180 डिग्री. And then once we get these two, तो sum of all the angles से ये भी मिल जाएगा. So let's start directly with B plus B is equals to 70 डिग्री. डायरेक्टली बोल देंगे vertically opposite angle. And C plus 100 degree is equals to 180 degree. Linear pair angles. Angle या axiom. Okay. So therefore C equals to 180 minus 100, that is C equals to 80 degree. Okay. Now A. So therefore A plus B plus C equals to 180 डिग्री. यहाँ पे रीज़न आएगा
sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree. So therefore, now A plus B plus C, B is how much? 70, C is 100, equals to 180 degree. So A plus 170 equals to sorry, यहाँ 80 मिला ना, so this is 80, sorry, my mistake. So this is equals to 150 degree. So therefore A equals to 180 minus 150, so angle A equals to 30 degree. Okay, 10th sum. Now see, this sums is omitted for year 2020 and also for year 2021. So just for explanation, in figure, line DE and line GF are parallel to each other. Ray EG and ray FG are bisector of angle. देखो ये वाला ये इसका bisector है and this one is bisector of this. So we have to do two proof. One is DEG, this is half of the whole angle. Another one EF is equals to FG. So now since we know this, they are bisector, we will write DEG and GEF are common equals to X, and also this two is equals to Y. Both are bisector. Then DEF is equals to this plus this, वही लिखा है एंगल एडिशनल प्रॉपर्टी, सो वो बन गया x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x डिग्री. ओके, एंड सिंस वी नो दैट ED इज पैरेलल टू FG, ये पैरेलल है तो उससे क्या हुआ, और ये ट्रांसवर्सल हुआ, सो ट्रांसवर्सल, so that means EDF and DFG. So now see EDF and DFG. So EDF this part and DFG this part, एक alternate shape हो गया, so alternate angle theorem. So now EDF and DFG is equals to Y. Okay, because by angle bisector we have already given DFG y डिग्री, हमने ऑलरेडी y डिग्री दे दिया था. सो इन ट्रांसवर्सल DEF एंड GFM, देखो ये ट्रांसवर्सल हुआ और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, this part and this part, so they are writing corresponding angles, वो भी y हो गया. Now in short what we are showing कि that ये वाला भी y, ये वाला भी y, so वो लोग दोनों इक्वल हो गए. So y is equals to 2x, y का वैल्यू हुआ 2x. So GFM is exterior angle of triangle GEF. So GFM is equal to this plus this, remote interior angle theorem. Now GFM कैसे बना, by adding GEF and EGF. Okay, GEF देखो ये वाला and this part. ओके, सो एक का वैल्यू x है, ये नहीं पता, y अभी भी हमने 2x बताया था तो वो 2x ले लेंगे, फिर ये x यहाँ आएगा माइनस हो गया. सो EGF इज इक्वल्स टू x डिग्री. सो
So in triangle they both are equal. Okay, therefore this is equal to EF is equal to FG.